Hello guys, welcome back to my YouTube channel Paradise of Science. We will read about NCERT Science Class 6 chapter number 10 Fun with Magnet. Firstly हम इसका introduction देखेंगे. A material or object that have property of attraction or pull force for ferromagnetic material like iron, cobalt, nickel, etc. is called as magnet. ऐसे मटेरियल या ऑब्जेक्ट जिसमें आयरन को अट्रैक्ट करने और अपने बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र मीन्स क्या फेरोमैग्नेटिक उत्पन्न करने का गुण होता है. एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकेल etc इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं. इस लेसन में हम यही सब रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक मैग्नेट्स एंड टाइप ऑफ मटेरियल. फर्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट फर्स्ट डिस्कवर प्राचीन ग्रीस में मैग्नेस नाम के एक शेफर्ड ने की थी. मैग्नेस अपनी गोट एंड शीप को माउंटेन पर ग्रेजिंग करने के लिए ले जाते थे. ही कैरी अ स्टिक विद अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच टू इट. उनके पास एक स्टिक थी जिसमें एक आयरन का छोटा सा स्मॉल पीस अटैच था. वन डे उनकी स्टिक रॉक में चट्टान की तरफ अट्रैक्ट हुई. उनको वापस खींचने के लिए काफ़ी हार्ड फोर्स का यूज़ करना पड़ा. उन्होंने नोटिस किया रॉक में जो नेचुरल मैग्नेट प्रेजेंट है जो उस स्टिक को अट्रैक्ट कर रही है आयरन की वजह से. तो इस तरह से नेचुरल मैग्नेट का डिस्कवर हुआ. इस शेफर्ड के नाम से इसका नेम मैग्नेटाइट रखा गया. बट सम पीपल्स का ऐसा बिलीव है मैग्नेट का फर्स्ट डिस्कवर मैग्नीशिया प्लेस में हुआ था. टॉपिक है आपका मैग्नेट एंड देयर टाइप. मैग्नेट आर द नेचुरली ऑस्क्योरिंग सब्सटेंस विद द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन. मैग्नेट में नेचुरल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है आयरन को अट्रैक्ट करने की. इट इज़ फाउंड एट नेचुरली ऑस्क्योरिंग रॉक. और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रॉक में प्रेजेंट होता है. रॉक की प्रॉपर्टी होती है जो स्मॉल पीस ऑफ आयरन होते हैं वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. हैंस दे आर कॉल्ड अ नेचुरल मैग्नेट. उसको क्या कहेंगे, नेचुरल मैग्नेट कहेंगे. दे आर परमानेंट मैग्नेट इन आ नेचुरल. ये क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि नेचुरल में प्रेजेंट होता है. नाउ अटैच आयरन पीस से डिफरेंट शेप में आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए जाते हैं. समटाइम दी बिहेव लाइक टेम्पररी मैग्नेट. समटाइम ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, टेम्पररी मैग्नेट की तरह. नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट. अब अपन देखेंगे मैग्नेट इफेक्ट किस तरह से करती है. यहाँ पर अपन एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट करेंगे और जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें स्मॉल मैग्नेट, स्मॉल पेपर, स्मॉल कप, थ्रेड, पेपर एंड आयरन क्लिप की रिक्वायरमेंट होगी. लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट सेटअप करेंगे. एक मैग्नेट को पेपर से कवर कर देंगे. इसे प्लास्टिक या पेपर के कप के इनसाइड में रखेंगे. कप को फ्लैप की हेल्प से स्टैंड पर लगाएंगे. आयरन क्लिप में शॉर्ट लेंथ का एक थ्रेड बांधेंगे एंड अदर एंड को बेस पर लगाएंगे. व्हेन आप क्लिप को कप को के बेस के नियर लाते हैं तो ये विदाउट एयर के ऊपर उठ जाता है, विदाउट एनी सपोर्ट के. दी एक्सपेरिमेंट शो द अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. ये क्या करता है, एक्सपेरिमेंट शो करता है कि किस तरह से मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ मटेरियल. मैग्नेट सभी तरह के मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है. सम को अट्रैक्ट करता है एंड सम इट इज डज नॉट. द मटेरियल आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप. मटेरियल को टू टाइप की कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है. फर्स्ट है आपका मैग्नेटिक मटेरियल. वे मटेरियल जो कि मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल. जैसे कि आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक ऑफ लैंड स्टोन इज द फर्स्ट स्टोन नेचुरल मैग्नेट विच कॉन्टेन आयरन. जो मैग्नेटिक और लॉर्ड स्टोन है वो फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट है जो कि कॉन्टेंट करते हैं आयरन को. नेक्स्ट है आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल दैट आर नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड आ मैग्नेट. वे मटेरियल जो कि मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं. दे आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मटेरियल. एग्जाम्पल है आपका लेदर, पेपर, प्लास्टिक. ये सब क्या है, एग्जाम्पल है. इनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है. Iron filings. When a magnet is rubbed in the sand or soil, some particles stick to the magnet.
The magnet is shaken well to remove these particles of sand or soil, but, still, a few particles stay in the magnet. These particles are nothing but small pieces of iron called iron filings from the soil. This way we can see whether the soil or sand from a given place contains iron particles or not. 2. Compass and its uses. The ends of a bar magnet that attracts the iron filings are called poles. All magnets will have two poles, north, N, and south, S poles. The north pole or north-seeking end of the magnet is the end of the magnet that points towards the north. The south pole or south-seeking end of the magnet is end that points towards the south. When a bar magnet is placed in a sheet spread with iron filings, they get attracted towards the ends of a bar magnet. The magnetic force is maximum at the poles of a bar magnet. A bar magnet is put into a container filled with iron filings. It is observed that more iron filings stick to the poles compared to the center of the bar magnet. Huang Ti's chariot, Huang Ti, an emperor in China, had a statue of a lady in his chariot that could rotate in any direction. The statue had an extended arm, always pointing towards the south. The emperor used this extended arm of the statue to locate directions when he went to new places on his chariot. Direction finder. The direction finder can be made easily by a simple technique. 1. Suspend a bar magnet on a wooden stand with a thread tied to the middle of the magnet. 2. Mark one end of the magnet and rotate it freely. 3. When it comes to rest, the position of the ends of the magnet are marked on the ground. 4. The line joining these 2 points show the direction in which the magnet was pointing at rest. 5. When we repeat this process, the magnet rests in the same direction again, which is north-south direction. The direction of the sun in the morning helps to find the direction towards east. It may not be exact, but helps to find north and south direction. Travelers used this method to find directions in olden days. Compass. The compass is a device which is used to find the direction. It consists of a glass box and a needle. A magnetized needle rotates freely inside the box. A dial is placed inside the box with directions marked on it. The North Pole needle colored in red shows the magnetic pole of the Earth. It is to differentiate between magnetic pole and geographic pole of the Earth. When the needle comes to rest, it shows the north and south direction. Our own magnet, 1. We can make our own magnet with the help of a bar magnet. 2. Place a rectangular piece of iron on the table. 3. Place one end pole of a bar magnet near one edge of the iron. 4. Till you reach the other end, move the bar magnet along the length of the iron bar. 5. Now bring the pole to the starting point of the iron bar and move it in the same direction again. 6. Note that the pole of the magnet and its direction should not change. 7. Repeat this process several times and check whether it has become a magnet by using a pin. 8. If not, continue the process again until it gets magnetized. By this method, we can convert an iron nail, a needle, or a blade into a magnet. 3. Attraction and repulsion of magnets. Action of magnets. When two magnets are moved close to each other, they either attract or repel each other. The opposite poles of magnets attract, whereas the similar poles of magnets repel when they are pulled towards each other. Attraction or repulsion of the magnets depends on the direction of the poles facing each other. Repulsion occurs when like poles, NN or SS of the magnets are kept closer to each other. Attraction occurs when unlike poles, NS or SN, of the magnets are kept closer to each other. Loss of magnetic property. The magnetic property of a material will be lost if they are A, heated, B, hammered, C, dropped from a certain height, or D, due to improper storage. Precautions to retain the magnetic property. The bar magnets should always be kept in pairs separated by a piece of wood, keeping the unlike poles on the same side. A piece of iron is kept across the poles for a horseshoe magnet. The magnets should be kept away from the electronic gadgets like cassettes, mobiles, television, music system, compact discs, CDs, and the computer. All the electronic gadgets will have magnets in it. When a magnet is placed near these gadgets, it affects magnetic property and hence spoils the device and the magnet. Exercise. Questions. Question numbered 1.
Fill in the blanks in the following. Solution I. Artificial magnets are made in different shapes such as haringstash and hauarig. The materials which are attracted towards a magnet are called in I. Paper is not a onahal material. IV. In the olden days, sailors used to find direction by suspending a piece of AV. A magnet always has I poles. Answer show the fill in the blank. Question no. 2. State whether the following statements are true or false. I. A cylindrical magnet has only one pole. False. IEI. Artificial magnets were discovered in Greece. False. III. Similar poles of a magnet repel each other. True. IV. Maximum iron filings stick in the middle of a bar magnet when it is brought near them. IV. False. V. Bar magnets always point towards north-south direction. V. True. Freely suspended bad magnet. VI. A compass can be used to find east-west direction at any place. VY. True. VYI. Rubber is a magnetic material. Vi. False question, numbers. 3. It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet, although its body is made of plastic. Name a material that might have been used to make some part of it. Solution: iron might have been used to make some part of it. Question. Note. 4. Column I shows different positions in which one pole of a magnet is placed near that of the other. Column 2 indicates the resulting action between them for each situation. Fill in the blanks. Solution: column, I column, 2, NN, repulsion, NS, attraction, SN, attraction, SS, repulsion. Question. Note 5, write any two properties of a magnet. Solution: properties of a magnet are as follows. It attracts objects made of nickel, cobalt, and iron. Like poles of two magnets repel each other, and opposite poles attract each other. 7. A bar magnet has no markings to indicate its poles. How would you find out near which end its north pole is located? Solution: a bar magnet is hung in the air, and the end pointing to the north is the north pole of the magnet. 8. You are given an iron strip. How will you make it into a magnet? Solution: take a bar magnet and keep in contact with one of its poles with one edge of the bar of iron. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. Lift the magnet and bring the pole, the same pole you started with, to the same point of the iron bar from which we began. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process for about 30-40 times. 9. How is a compass used to find directions? Solution: a compass always shows north and south directions. By keeping this as a reference, we can always find east and west directions also. 10. A magnet was brought from different directions towards a toy boat that has been floating in water in a tub. The effect observed in each case is stated in column 1. Possible reasons for the observed effects are mentioned in column 2. Match the statements given in column 1 with those in column 2. Solution: mention in a table. Thank you for watching Paradise of Science. Don't forget to click subscribe, like, and share.